Good morning, class. Let's continue with our topic in computer book, page number 111, Internet calls. So, we were studying what are the popular services on the internet. Yesterday, we had studied three topics from this: World Wide Web, video conferencing, and chatting. So, another service provided over the internet is internet calls. Using the internet, you can make voice and video calls to anyone across the world at much lower rates. There are certain softwares like Skype and Viber that need to be installed in the devices at both ends to make these calls. So, these are some software which are available to do internet calls to the other persons. Through these softwares we can make voice call and video call to the other person if he or she is having the same application in her device. Next is electronic learning, e-learning. So e-learning means learning with the use of technology anytime and anywhere. It is implemented using the internet connection, a network and storage disk. E-learning saves time and reduces the need for costly classroom-based training. So another facility which is provided by the internet is e-learning, which stands for electronic learning. In e-learning, the students can study anywhere with their device having online connection. Like we have Byju's classes this time. Okay, we have some other e-platform to study, so we don't have to pay so much amount for the live classroom, and also we can study through our device by sitting at our home or any other place by this e-learning feature of the internet. So it reduces the cost and expense, and also it saves the time. Next is electronic banking, e-banking. So uh, in previous time there was no internet and there was no e-banking available, so we have to go to the bank for even debit or credit of money, or even for the shorter reason we have to visit bank frequently. So with the evolvement of e-banking, now all these little problems are sorted out. So e-banking helped the users to do bank transaction through the internet without going to a bank. Nowadays we can pay money and receive money from the other person through our mobile phone without going to the bank. So this feature is available to us through electronic banking. Gain knowledge. E-learning is also called as online learning. So other name for e-learning is online learning. Next is electronic commerce, e-commerce. So e-commerce refers to buying and selling of various product online. So हम मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, या हमारे यहाँ कोई दुकान है तो हम सामान बेचते हैं, कस्टमर्स आते हैं और हम उन्हें सामान देते हैं और पैसा लेते हैं. ई कॉमर्स में भी यही होता है, सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकली हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं. लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजन बेस्ट एग्जाम्पल्स. ऑन फ्लिपकार्ट वी प्लेस ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट विच वी वॉन्ट एंड वी पे द मनी ऑनलाइन. फिर फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय वो सामान हमारे घर एक पर्टिकुलर डेट तक ले आ जाता है. सो क्या हम उस शॉपकीपर को जानते हैं? नहीं जानते हैं. फिर भी हम उस सामान को खरीद रहे हैं अपने घर में ही बैठ के, हमें कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है. सो थ्रू ई कॉमर्स वी कैन purchase things and we can also sell things online. Okay, internet is used as convenient way to shop from home or other places. Some popular e-commerce sites are amazon.com, flipkart.com and ebay.com. Nowadays there are many other websites through which we can shop like Nykaa, Purple, Meesho, many others. ओके, सो इनकी हेल्प से हम अपने घर पे या कहीं पर भी बैठकर सामान ऑर्डर कर सकते हैं. सो दिस इज ड्यू टू ई कॉमर्स. After this is Internet TV. Underline, Internet TV is web television and is available wherever a broadband connection exists. So what is Internet TV? It is a web television, kind of television which we can watch with the help of internet. If we have internet or broadband connection in our device, we can watch movies, shows or anything we want to
visit through internet TV. It is a replacement for cable TV. An internet TV can be watched on a computer screen, television screen and a mobile device. So पहले इंटरनेट टीवी जब नहीं था तो हमारे पास बस टीवी थी, हमें जो भी सीरियल या मूवी देखना है हम उसको टीवी में ही देखते थे. सो अब क्या है, इंटरनेट टीवी. इंटरनेट टीवी की हेल्प से वी कैन हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द शो, serial, movies in our mobile phone, computer or device through internet. So the program can be searched and retrieved anytime. Hotstar and Sony Live are some popular internet TV service providers. So Hotstar, Sony Live, Art Balaji and Amazon Prime, all these are a kind of internet TV जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को, जो उसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स है, किसी भी टाइम सर्च करके कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं. इवन कोई सा भी पिछला एपिसोड हम फिर से प्ले करके देख सकते हैं. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट टीवी. In green box there is think and answer. 3 questions are there. This is your homework. Why is a computer network beneficial? So you have to write any 3 benefits of computer network. How is LAN different from WAN? Any 2 points about the difference between LAN and WAN. Then what are web pages? Definition of web pages. So this is your homework. You have to do it in your fair copy. Then last heading of this chapter is NETIQ. Underline, NETIQ are the set of rules to be followed while using the internet. So NETIQ is basically a set of rules. In NETIQ there are various rules which we have to follow when we are using internet. So let's learn about them. First point is, never reveal your address, phone number or any other personal information to a stranger in a chat room. There is a chance that he or she may not be the person he or she is claiming to be. So if you are chatting to any other unknown person through social media, so it is suggested that do not tell your actual address, mobile number or any other personal information regarding yourself to that strange person. बिकॉज इट मे बी कि दैट आप उसको कुछ और समझ के बात कर रहे हो और वो इंसान नहीं हो, जबकि कोई और हो. आपके उस एड्रेस, फ़ोन नंबर या उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो फ़ायदा उठा सकता है. सो आपको किसी भी स्ट्रेंजर को अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर या कोई और पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है. नेक्स्ट इज़, नेवर एग्री टू मीट एन ऑनलाइन फ्रेंड अलॉन. इफ़ यू गो टू मीट अ पर्सन, टेक एन एल्डर विद यू एंड अरेंज टू मीट एट पब्लिक प्लेस लाइक अ पार्क और अ बॉल. सो किसी भी ऑनलाइन फ्रेंड से जिससे आपकी फ्रेंडशिप ऑनलाइन हुई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई है, कभी भी उनसे मिलने के लिए अग्री मत करिए. और अगर आप मिलना चाहते भी हैं तो कभी हमेशा किसी बड़े के साथ जाइए और किसी ऐसी जगह पर एग्री मत करिए जो क्लोज्ड एरिया हो या प्राइवेट प्लेस हो. अगर मिलना ही है तो किसी पब्लिक प्लेस पर मिलिए, सच एज पार्क और अ मॉल. थर्ड इज़, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ नॉट करेक्ट. इंटरनेट पर जो कोई भी लोग अपना बायोडेटा एक्सप्लेन करते हैं वो कभी हमेशा सही नहीं होता है. सो वेरीफाई द इंफॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल सोर्सेज बिफोर यूजिंग इट. उन सोर्सेज को यूज़ करने से पहले आप वेरियस प्लेटफॉर्म से उसको वेरीफाई कर लीजिए कि दैट अवेलेबल डेटा इज़ करेक्ट और नॉट. So these were some rules, some safety measures that you should follow while using the internet. With this, our chapter is completed. Take words and quick recall. Read it yourself. Internet, LAN, WAN, MAN, web browser, website. Read it yourself, and also along with think and answer, do exercise A and B in your book. So this is your homework. That's it for today. Thank you. Have a nice day.